Houston native Ron Rama, real estate investor, motivational speaker, and serial entrepreneur, will be featured exclusively on Radio Naya Andaz. This self-made Pakistani entrepreneur is making major waves in the real estate world. With over 100,000 plus social media followers, he has built a massive brand, featured on Yahoo Finance and many real estate podcasts around the US. Looked upon in the industry as a leader and has inspired thousands to take action. He will be live on the show sharing how he closes everything from single-family homes to mega multi-million-dollar apartment complexes. You don't want to miss this one. Tune in Sunday, June 20th at 5:30 p.m. sharp as we interviewed the successful entrepreneur in our community. Welcome back to Radio Naya Andaz. Thanks for listening. Thanks for joining us. Of course, Radio Naya Andaz आप लोगों के दरमियान मौजूद हवाओं की दोष पर और इंटरनेट की लहरों पर रेडियो नया अंदाज की प्रेजेंटेशन साल से आप लोग पोल्यूशन फ्री प्रोग्रामिंग सुनते आ रहे हैं. वी अप्रिशिएट सैकड़ों हमारे ग्लोबल लिसनर्स, हमारे तमाम ह्यूस्टन में तमाम जो लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम को और हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं. ऑफ कोर्स हमारे तमाम पार्टनर रेडियो स्टेशंस ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, जहां हमारी प्रोग्रामिंग को रीब्रॉडकास्ट रिले किया जाता है. वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ माइनिंग मनी, जिसमें आप लोगों के लिए हम मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स, मुख्तलिफ कम्युनिटी लीडर्स और आप लोगों के लिए उन शख्सियात से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स दैट कैन हेल्प यू इन डिफरेंट टॉपिक्स, लर्निंग, मोटिवेटिंग एंड सो मच मोर. वाओ, वेल ख़वातीन साथ एक दफा फिर आपको रेडियो नया अंदाज पर वेलकम, खुशामदीद. क्या इंट्रो दिया है नबील भाई ने, आला, मजेदार. ये वो सेगमेंट होता है जिसका हम खुद भी बेइंतहा इंतजार करते हैं. बात यह है कि प्रदेश में मुकीम हम साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग, स्पेशली द इंडियंस, पाकिस्तानी, साउथ एशियन, नेपाली, बांग्लादेशी, आई मीन जहां भी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इस लबो लहजे को आप समझते हैं. हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये रहती है कि जहां नॉलेज हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, वहां कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को मिले. नबील भाई, यस, बिटकॉइन, राइट, यस, स्टॉक मार्केट, कहीं गोल्ड में पैसा लगा दे बंदा, कहीं कुछ और कर ले, लेकिन क्या कर ले. वेल ये वो बबल्स हैं जो जब एक दफा फटते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीज इंसान के साथ हो जाती है. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ी ऐसी मार्केट मौजूद है जिसकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचती भी है तो कट एंड पेस्ट, वेब बेस्ड वो इंफॉर्मेशन जिसकी कोई गारंटी, वारंटी नहीं है. तो बहुत रिक्वायर्ड होता है कि जब आप किसी को किसी एक खास इन्वेस्टमेंट या एक खास एंगल चेक कराना चाहें तो फिर ऑथेंटिक लोग हों, प्रॉपर लोग हों, उसकी एजुकेशन हो, उनके पास नॉलेज हो,
उनके पास एक्सपीरियंस हो, उनकी क्रेडिबिलिटी में वो चीजें मौजूद हों कि जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो यकीनन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. नबील भाई, विदाउट फर्दर ड्यू मैं चाहूंगा इंट्रोड्यूस करें आज हमारे गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं. इस शहर की बड़ी सोशल पर्सनालिटी है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत पुराना हमसे इनका साथ भी है. बट ऑफ कोर्स हम सब इनके फैन हैं इन अ सेंस के जिस तरह प्रोफेशनली इन्होंने अपने आप को इस मार्केट में मेंटेन रखा है और लोगों की रिक्वायरमेंट पर ना जाते हुए बल्कि लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट प्रोफेशनली समझाते हुए उनको कन्विंस किया और एक बहुत ही जबरदस्त different market business plan introduce किया. What are you going to say, sir? That's right. Zad, of course, without further delay, हमारे studios में we have a very special guest, a very good friend, and of course, he is a motivational speaker. He is a real estate investor, and जिस तरीके से one of the fastest growing real estate companies, Investopia online.com. जहां they are growing so fast globally, of course, all over Texas, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इन चंद if you look at it, थोड़े ही वक्फे में, थोड़ी ही ड्यूरेशन में they have grown so much. Of course, he's been featured in Yahoo Finance and other podcasts, and of course इनके मुख्तलिफ वीडियोलॉग्स और मुख्तलिफ फॉलोअर्स मौजूद हैं. Of course, without further delay, आइए आप लोगों की मुलाकात और बातचीत कराते हैं with the man himself, Ron Rana. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rehan bhai, Ahmad bhai, thank you so much for having me on your radio station. I am fired up. Your viewers, I hope they're fired up. We're going to be dropping a ton of nuggets, a ton of gems. We're going to be talking about real estate investing. And Rehan bhai didn't mention real estate investing yet, so he mentioned Bitcoin and all the other ones. But the most tangible asset to build wealth is real estate, no matter what. It's been tried and true. So thank you guys so much for having me on this show. I'm truly humbled and honored. No matter how many people I motivate, no matter how many people I inspire, talking to my own people, अपने लोगों से जब बात होती है, अगर उनको इंस्पायर करना तो वो बड़ी बात होती है. Right? And that's what I'm here to do. I'm here to inspire our youth. I'm here to inspire our elders. I'm here to inspire everybody to go out and just take action, because gold is only 3 feet away. There's a wonderful book out there, and we're going to dive into a whole bunch of self-development stuff, but you're only 3 feet away from gold. But Nabil bhai, Rehan bhai, thank you guys so much for having me on your show. It is truly an honor. I mean, this is bigger for me than Yahoo Finance or my 100,000 plus social media follower. This is bigger because you guys hit it home for me. I'm a native of Houston. I grew up listening to your radio station, and I'm just excited to be here, as you guys can probably tell from my voice. So let's get right on. Thank you so much. Absolutely, of course, when Ron is here, the energies, पूरी तमाम जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तमाम लोगों के लिए, सैकड़ों हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ये सेगमेंट. और इसमें ऑफ कोर्स हमारे आज स्पेशल गेस्ट जब रॉन राना मौजूद हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर सकेंगे. रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो है वो कैसे बने, हाउ ही स्टार्टेड, अ वेरी ग्रेट स्टोरी ऑफ हिज, एंड हाउ एट हिज वेरी यंग एज ही हैज़ बिन अ वेरी डायनामिक लीडर फॉर आवर कम्युनिटी. तो रॉन राना, कैसे स्टार्ट हुआ ये सारी चीज़ें? यार आपने तीन बच्चों के बाप को यंग बना दिया. बड़ी बात है. Thank you so much. My start came from very humble beginnings. I was raised by a single mother. I grew up here in Alief, Texas. So if you guys are listening from Alief, shout out to represent Hastings. Absolutely. So I started, when I was younger, I've always wanted something. Well, let's get to the point. I wanted to become wealthy. Right? Who doesn't like money? Who doesn't want money, right? The new shiny object these days is either Bitcoin or something else, right? So my beginnings are very humble. I was raised by a single mother. So I do want to wish my mother a very, very happy Father's Day. She's been a huge, crucial support. Without my Ammi's support, I would not be here. Without the support of Allah subhanahu wa ta'ala, I would not be here. So first and foremost, credit goes to God himself for putting me in a position to impact
so many people's lives. And my mother, you know, being able to retire my mother at such a young age is a phenomenal feat. And I think that's something that a lot of us young generation wants to do. So starting out, I didn't know kind of where to start. I started going to seminar after seminar after seminar, and I just heard everybody saying how easy it was, right? And that's what everybody says. It's so easy to get started, right? Yeah. But you got to cut a check for 200 grand, right? You got to cut $100,000 check. I didn't have that money, right? When I started real estate investing, I had no money, I had no credit, I had no previous experience in real estate background, but I had एक वो जज्बा था मुझ में, एक वो जुनून था और पैशन था कुछ बनने में, कुछ लोगों को दिखाने को कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ जिंदगी में, right? And especially motivating, the motivating factor और माँ का प्यार जो है, right? It's a huge factor. माँ की दुआएं बहुत लंबी तक लोगों को लेके जाती है. और I do want to give definitely a huge shout out to the mother of my children, Kinza. She's been a huge support. We've been married for over 10 years now. I can't, mashallah, she's been a huge support. And, any business has their ups and downs. But my start came from, again, very humble beginnings. I run Investopia online along with multiple 6 to 7 figure businesses, multi-million-dollar companies. So these are, and again, for me in order to do that, the reason why I started doing this was to break the cultural barrier, right? हमारे culture में क्या होता है? Either you're a lawyer, a doctor, or an engineer, right? मेरा बेटा, बड़े होके lawyer बनेगा. मेरा बेटा बड़े होके doctor बनेगा. मेरा बेटा engineer बनेगा, right? बन तो जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ जाएगी? ये आप भी देखें ना. And we live, especially us millennials, we don't follow the money anymore. We follow the passion. If it makes us happy, that's where we're gonna go, right? We are, and that's what I'm here to do. I'm here to gap that generational gap between our elder, हमारे जो बुजुर्ग हैं, और हमारे जो millennials हैं, right? Because what's the number one thing that millennials say? माँ बाप don't understand what I'm talking about. Either they're talking about Bitcoin, they're talking about investing, or they're talking about this and that. Oh, तू नहीं कर सकता school, my little my Punjabi's coming out. Oh, no chadda school च रहा तू, right? So absolutely, right? And that's what it is. As long as you believe in your dream and you want to become somebody in life, there's no power in this world that can stop you, truly, right? And your biggest enemy is going to be yourself. आप जब शीशे में देखते हो सुबह ना, आप उठते हो, ब्रश करते हो, right? खाना खाते हो, चाय पीते हो, चाय पीने से पहले I hope आप शीशे में झांक के देखते हो, right? तो you have to look at yourself. आपका जो सबसे बड़ा enemy जो होगा ना, वो आप होंगे. It's going to be yourself. You have to be able to get out of your way and do the work. Because if you don't do the work, you won't be able, you're not going to be able to, reap the benefits. But yeah, that's kind of where I come from. No, that's good. Yeah, I mean, overall, just and we've seen him kind of growing, how he kind of started, and look at the energy. Energy, बिल्कुल जबरदस्त. एक पूरा thought process है, एक philosophy है, और एक ऐसी, डायरेक्शन है जो हमने ख़वातीन आज़ाद स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि रॉन राना मौजूद हों तो आपके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होगी बल्कि लाइफ के गोल, मिशन, टारगेट, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी. आज के प्रोग्राम में जहां ये सारी बातें तो होंगी, बट आपको टू द पॉइंट हम उस पॉइंट पे भी लेके जाएंगे कि आपकी लाइफ में रॉन राना क्या कर सकते हैं. क्या चीज़ आपको ऐसी बताते हैं, किस चीज़ की तरफ आपको लेके जाते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी वो डायरेक्शन जो कहीं स्टक हो जाती है कि सिर्फ गैस स्टेशन बना लो, एक सेलफोन स्टोर खोल लो, आपको एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं. ऑफ कोर्स बुलेट प्रूफ प्रोग्राम दुनिया में कोई नहीं होता, सब जगह कुछ ना कुछ आपको प्लस माइनस मिलते हैं, लेकिन जिन लोगों को तमाम डिटेल्स मालूम होती हैं, मार्केट रिसर्च होती है, जिनका प्लान कॉन्क्रीट होता है, ऑफ कोर्स उसमें फिर अल्लाह ताला भी बरकत डालता है. ऑफ कोर्स. वेल, रॉन राना हमारे स्टूडियोज में मौजूद हों तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिलेगी और आप बहुत सारे टेक अवेज और नोट्स लेकर जाएंगे. लेकिन आज ऑफ कोर्स हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. इज नोन ऑफ कोर्स, हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग इनको जानते हैं, कम्युनिटी एट लार्ज में इनको बहुत सारे जानते हैं. एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टर की जो पूरी इंडस्ट्री है इसमें अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम एंड हिज कंपनी. Ron, of course, you started off, आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों को स्टार्ट किया, and
a while. It's a lot of hard work, a lot of duas and everything else. वो जो हमारे इस वक्त listeners हैं जो of course real estate और जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है और it's a very good investment के तौर पर भी है. हम भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि कुछ बन सकें, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ बन सकें. अगर जो लोग इस वक्त कुछ कर रहे हैं, they want to change direction, किसी इंडस्ट्री में, कोई ऑयल एंड गैस में है, कोई किसी और काम कर रहा है, कोई जो है वो तकिए के नीचे पैसे बना के रखा हुआ है and he wants to do something with that money as well, what would you tell that person who's listening to us and he is definitely, absorbing that energy that's coming out of this radio show right now, coming out of you? What is his start? Where does he need to do? What does he need to do to start something and become something like you? Number one is knowledge, your education. Your education is something that nobody can steal from you ever, right? आपकी जो एक तालीम होती है, कोई आपसे जो है एक दिन आके वो चोरी नहीं कर सकता ना. Right. And I would say get started, get educated from the right people who are doing this business right now. The market has shifted. Coronavirus came, COVID-19 came. We had to shift our company. We had to shift how we do business. We had to shift personnel. Right now, not all of my employees are not working from our office out on Eldridge and Briar Forest. We went all work remote, from home, yeah. remote, right? And that's huge. Yeah. So, the first thing I would tell people is get the right knowledge and from the right people. It can be me, it cannot be me. If you're one of those desis who say, hey man, I'm going to show him and I'm going to become better than him, I want people to do that. Yeah. This is why I'm on your show, is because true, wealthy people, jinke paas paisa hota hai, realistically, that I've talked to and I've been around, have an abundant mentality. Yeah. People want to see you grow, right? हमारी society में क्या कहा जाता है कि don't इसको नहीं बताना ये चीज, ये हमसे आगे निकल जाएगा, right? और यही खौफ जो है ना हमारी society को पीछे लेके जाता है. आप Jewish community को देखो, right? The Jewish community helps and supports their young, just like they're they pull money together and they say, hey, let's help them grow. Why don't we have that in the Muslim community? Why don't we have that in our you have Hindu South listeners Asian, too, right? South or the South Asian community, right? And we need somebody to take the flag and start running with it, and that's all I'm trying to do. All I'm trying to do is inspire somebody, at least one person on your show, to go out and take action and to build wealth for not only themselves but for their family, right? Because let's face it, the reality is कई लोगों को अपने दादे का नाम भी नहीं पता, परदादे के नाम भी नहीं पता, right? उन्होंने जो है legacy जो है नहीं बनाई है, right? At the end of the day. Right. And that's the thing with people, right? They're not going to remember you. 5 साल गुजर जाएंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, और याद भी नहीं रखेंगे. I'm sorry, I talk like 500 miles per hour, so I'm just, You're good. So, लोग याद भी नहीं रखेंगे आपको, right? आपकी जो true generational wealth है ना, जो आपकी जो true generational wealth है, that is leaving behind your legacy. My legacy is not going to be for my kids. My legacy will be how I impact people. Okay? And that's why I'm doing this. Because my why is greater than my excuses. Right? Because you can make all the excuses in the world. Right. Oh, yaar, 5 baje subah ke mujhe nahi utna, fajr ki le le. Kitne Muslim utte hain fajr ke liye? Aap stats le lo, right? You, in fact, in Islam, in the azan, come to success. It tells you. Your religion teaches you about success. And if you don't want to get up, and if you're not motivated enough, you're not going to change your circumstances at the end of the day. Right. So that's where I'm at. My legacy is to help as many people create their own way, their own path, their own journey. Nice. Very nice. Well, ख़वातीन ज़ात, इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं ये तमाम बातचीत with Ron Rana. He's fired up. He's telling you all about how to start. If you're you've been hit hard from COVID and you want to change the path, you've been impacted by different circumstances of financial crisis or anything. I think this is the biggest takeaway is that you can start now. You can learn. You can get yourself educated. और ये तमाम information के लिए you need somebody who can at least guide you, right? कोई आपको जो है वो आखिर वक्त तक हाथ तो नहीं पकड़ेगा, but आपको direction ज़रूर दे सकता है. आपको 100%. They can show you the light where you can actually do your मेहनत. You can
आपके अगर पैशन है आपका, आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी एनर्जी है, यू विल एक्चुअली बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट. लोग तीन चीजें चाहिए होती हैं, राइट? जिंदगी में तीन चीजें चाहिए होती है रेहान भाई. ओके, एक है मेहनत, ओके, दूसरा है जज्बा, राइट? You can't have one without the other, right? And at the end of the day, किस्मत plays a big part. लेकिन आप यकीन भी नहीं करोगे, लोग कहेंगे अल्लाह देगा मुझे, अल्लाह देगा मुझे, अल्लाह देगा मुझे, या भगवान देगा मुझे, या कोई भी देगा मुझे, right? If you don't get up and you don't take action, no one's going to give you anything, right? Allah Ta'ala says, you walk 2 feet to me, I'm going to walk 100 feet towards you. Right? You have to help yourself in order for people to help you. Right. At the end of the day, you're like I said, आपकी जो किस्मत है, right? And आपका जो जज्बा है और मेहनत है, right? मेहनत तो सभी करते हैं, right? Yeah. Passion किसी के only हर किसी के पास नहीं होता, right? That's it, because you can work hard and hard and hard. Look at, अगर हमारे जो बुजुर्ग सुन रहे हैं, they've been working for 20-30 years. क्या आता है महीने के एंड में आपके? क्या आता है? $100, $200 बिल के बाद from savings, right? That's the problem we have. Our culture has not been conditioned. Okay, our culture and our society has not been conditioned to know the difference between assets versus liabilities. And that's what real estate plays in. You have your assets pay for your liabilities. आपके liabilities, for example, घर का खर्चा, खाने का खर्चा, बीवी की shopping ईद के लिए, it's expensive, right? We're all married here. We're all married here, right? I mean, it is what it is at the end of the day, right? लेकिन real estate एक चीज है जो आपको assets, वो income produce कर सकती है. You take those income that you produce from those assets and then you spend it on your liabilities. Does that make sense? But our culture is, यार उसने अदनान ने वो फरारी ले लिए, मैं भी लूंगा फरारी. यार उसने नई टोयोटा निकाली है, मैं भी नई टोयोटा निकालूंगा. वो सिएना ली है, मैं भी लूंगा सिएना. You're in a competition. That's the problem with our society. We're competing with each other. लोगों को जो है चुल्ले में डालो और अपना जो है ना आप करो. That's at the end of the day, that's what's going to make you successful. Is you're going to be successful if you start competing with yourself. और आप जो है compare ना करें. और हमारी जो बुजुर्ग हैं बोलते हैं ना, ओ उसके बेटे ने BA किया है, या उसके बेटे ने ये किया है, वो किया है, या बेटी ने ये किया है. You guys have to start motivating your children. No matter what their passion is. That's the problem with our society, is that our biggest support become our biggest failures. Right? Our family. घर से शुरू होता है. अगर किसी ने, they want to start investing in something, nowadays, absolutely, Bitcoin is phenomenal. But I'm not here to talk. I'm here to talk about tangible properties, right. Real estate. Real estate will never fail you, no matter what. Right? 90% of people in the world, Ahmed Bhai, 90% of people in the world become millionaires through real estate. Yeah. Wow. There are over 1,000 millionaires created every single day from real estate. Over 1,000. Are you going to be the next one? Yeah, and I think Rehan, अगर हम देखें तो I mean real estate is one of those things कि Houston की market हो या आप nationally, internationally देखें तो Houston को देखा जाए तो recently it's been very hot and a lot of people have invested in real estate and they have doubled, tripled their assets or this is something that's tangible, that is long term. आप जो है वो हमेशा जो है you can fall back on something like that. बिल्कुल. और एक ऐसी चीज है जो आपको नजर आती है, आपको बताई जा रही है. ख़वातीन हज़रात, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो नया अंदाज़. रॉन राना हमारे साथ मौजूद. रियल एस्टेट्स की कुछ खास अवेयरनेस एक अपने स्टाइल से, एक अपनी एनर्जी से आपके लिए पेश कर रहे हैं. डेफिनेटली ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सामने होती है, हमारे आसपास होती है, लेकिन राइट टाइम डिसीजन जिसे कहा जाता है, हम हमेशा कहीं बाज दफ़ा मिस कर जाते हैं. एक ही तरह, एक ही सिस्टम में, एक ही पहिए का आप हिस्सा बनते हैं और घूमते रहते हैं और परेशान होते हैं. बट इन दिस कंट्री, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस तरह अभी रॉन ने कहा कि अगर आपके पास जज्बा है, अगर आपके पास मेहनत की लगन है, राइट डायरेक्शन है, अप्रोच है और प्रोफेशनल्स का ओपिनियन आपके साथ मौजूद है, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ फाइनेंशियली इनकलाब लेके आती है बल्कि आपको बहुत कुछ सोचने का मौका देती है. और पूरी दुनिया में, जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था कि बिटकॉइंस हों, स्टॉक मार्केट्स हों, ये वो बबल्स हैं जो मे भी आपको एक दफ़ा पैसे बनाते हैं लेकिन उसके बाद आपको कहीं ले जाके ऐसा पटकते हैं कि आप दोबारा उठने के काबिल नहीं लेते. बट रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसमें सेंसिबली
आपको बिल्कुल प्लग इन किया जाता है, समझाया जाता है। और वेल, फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर डायरेक्शन, फॉर मोर नॉलेज के किस तरह एक आम आदमी इस वक्त जो हमें सुन रहा है वो किस तरह इसमें प्लग इन हो सकता है। बाज़ दफ़ा लोग रॉन सोचते हैं कि हमारा तो इतना बड़ा बजट नहीं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, हमारे तो रिसोर्सेज नहीं, ये अपॉर्चुनिटी हम भी अवेल कर सकते हैं। दिस इज द की थिंग जो रॉन आपको बताएंगे कि अगर आप बहुत ज्यादा भी कहीं ग्रो नहीं कर सकें, ये बात ही आपकी ग्रो करने की हो रही है, डेफिनेटली आप इसका पार्ट भी बन सकते हैं और प्लग इन भी हो सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ख़वातीन हज़रात, ऑफ कोर्स रॉन राना, आखिरी सवाल, टेक अवे, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर ऑल दोस्त जो सुन रहे हैं, दे आर एक्साइटेड, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग and they want to learn more about real estate. So where can they go and learn more about this stuff? Absolutely. So we run an education company out here in Houston, Texas, where I teach investors all over the country how to get into real estate investing. Yeah. Okay? So a lot of our students come into the program and we teach them how to get in with no money out of pocket, with no previous experience and no credit, because at the end of the day, it's your knowledge. Yes, we are taking these properties down. You wouldn't imagine how much we're buying these properties for. $10 on contracts. We're buying these properties for $10, and we show our students how to acquire properties and how to take that contract and how to flip it. Yeah. Okay, so yes, we do have an education business that where we teach people. Many of our students are from Houston. I don't know if you are familiar with Sadaf and her husband. They made last month a $75,000 flip profit. Very nice. Could you use 75 grand? Man, everybody can use 75. They did that in under in under a month. Oh wow. My biggest deal was a $2.6 million apartment complex, 120 unit, and that was a over $300,000 nice. profit. And we made that in 2 months. क्या बात है? So real estate is the way to go. In order to build your wealth, real estate is the way. I'll give you guys a number if I can. Sure, please. Your viewers can text into our text line. It's 713-999-8707. Type Radio Naya Andaz or type in Naya Andaz. And we'll get you the information to get started today. We're going to get you actionable steps in order to do this business. I have inspired thousands of people to take action. We have many students across the country doing the exact same method that we teach here. And we're in the business. I do this business every single day. And I walk my students every single day through deals, through real properties. So if you guys want to learn how to break your generational curse, how to build wealth for your family, and how to make an extra, $10,000, $20,000 a month doing real estate, then definitely give us a shout. Our number is 713-999-8707. Text Naya Andaz and we will get you the information that you need to get started. Absolutely. Excellent. Wow. Well, ख़वातीन हज़रात, of course. नंबर एक दफा फिर हो जाए, 713-999-8707. Once again, 713-999-8707. Just type and text Radio Naya Andaz. That's right. जरूर आप टेक्स्ट कीजिए, जरूर मालूमात आपके लिए इंस्टेंटली आपको मिलेगी, जो पूरा पैकेज के आप जो है वो किस तरीके से, ऑफ कोर्स इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है कि इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग टू टेक्स्ट एंड फाइंड आउट एंड गेट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि क्या है ये पूरा सिलसिला. इफ़ यू हैव अ फुल टाइम जॉब या आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और आप साइड में कुछ करना चाहते हैं, you can always do that as well. You can do this, yes, 100%. You can do this business part-time and then transition it out to full-time. A lot of my students have did that. I have a student who worked at a car dealership as a sales manager over at in Katy, and he started this part-time. In 2 weeks, he made an $18,000 profit. Wow. Quit his job, and he is now doing multiple deals a month. He's doing between 5 to 7 real estate deals a month, and he's on his way to build a full multi-million
multi-billion dollar real estate company. So I have students like that also. No matter if you want to do your first deal, if you want to do, you know, multiple deals a month, we're here for you. And we're here to give you all that knowledge. Nothing matters if you don't take action. And the last thing I want to touch base on is a lot of our society, right? The three most dangerous words in our Urdu or Hindi language is log kya kahenge, right? Don't worry about what other people think because they don't pay your bills. Unki opinions jo hai, aapke bill nahi bharti. Right? At the end of the day, it's up to you to go out and take action. Your first step is going to be texting that line. Get in touch with my team. Let's see where you're at right now, mentally, financially, and just see, you know, how we can help you out. Because we don't accept everybody into our program. That's the truth. Not everybody is ready for us. And we're not ready for everybody. Right? I'm not here to say, hey, you know, come by my program and I don't need your money. I'm here to inspire you to take action. And those who take action, I mean, they will be able to get history, somewhere. It's history from there. Absolutely. There you go. Well, first step, Khawateen Zat, if you're interested, you want to learn, 713-999-8707. Ladies and gentlemen, that was estate investor, motivational speaker. Thank you, brother, for coming into our studios and sharing a lot of great insights about this industry and how people can really start something and change their lives. So, बहुत शुक्रिया. Thank you so much for having me. I appreciate it. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी इन करीब. बहुत शुक्रिया. Thank you. बहुत ही ज़्यादा आप लोग डायल सुनते रहिए रेडियो नया अंदाज. All right, guys. Thank you so much for tuning in to the radio interview. I appreciate each and every one of you guys. Ron Rana signing out. Peace out, baby.